छत्रपति संभाजीनगर में बागेश्वर बाबा के कथित बयान के खिलाफ मराठा समाज के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। क्रांति चौक पर हुए आंदोलन में शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई। छत्रपति संभाजीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए कथित बयान के विरोध में अखंड शिवप्रेमी समाज और मराठा समाज के लोगों ने क्रांति चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने बिना किसी ठोस ऐतिहासिक आधार के शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। आंदोलन के दौरान लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और बागेश्वर बाबा के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान गधे पर बैठे बागेश्वर बाबा के प्रतीकात्मक पोस्टर भी दिखाए गए। मराठा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। रामदास स्वामींनी म्हटलं की शिवाजी महाराज माझे शिष्य होते आणि शिवाजी महाराजांनी म्हटलं की रामदास स्वामी माझे गुरु होते। मग तत्कालीन परिस्थितीमध्ये संत आणि महापराक्रमी दैदिप्यमान युग पुरुष यांच्यातला कुठलाही संवाद झाल्याचा, भेट झाल्याचा इतिहास नसताना तद्दन एक समाजामध्ये एक भोंदू महाराज ही शिवाजी महाराजांच्या वर एक महाराज गुरुत्व म्हणून का म्हणून बसवला जातोय, याचा अर्थ हा सिद्ध करायचा त्यांना की शिवाजी महाराजांनी जे दैदिप्यमान जगाला आदर्श ठरणारे कर्तृत्व निर्माण केले ते फक्त आमच्या एका विशिष्ट जातीच्या संतांच्या मार्गदर्शनामुळे केले आणि हा खोडसाळपणा अनेक वर्षापासून इतिहासामध्ये चाललाय। उत्तरोत्तर इतिहासाच्या संशोधनामध्ये सिद्ध झाले, न्यायालयाने सिद्ध केले की संत रामदास स्वामी हे शिवाजी महाराजांचे गुरु नव्हते। तरी परत का कारण त्याच्या मागे एक आहे, त्याच्या मागच्या दोन गोष्टीत, एक तर खरोखर छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारे जनमानसात किती जागृत आहेत याची एक तर लिटमस टेस्ट घेणे, किंवा आजच्या ह्या कॉम्प्युटरच्या मोबाईलच्या युगामध्ये कुणीही सखोल अभ्यास करत नाही, मग इनडायरेक्टली त्याच्यावर अशा पद्धतीचा चुकीचा इतिहास लादणे।